लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको MBA थर्ड सेमेस्टर के वर्किंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्किंग कैपिटल सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपको मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चन को ध्यान से एक एक करके पढ़ते हैं और मैं ये आपको रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। आइए देख सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पूछे हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विद एग्जांपल। क्वेश्चन फोर्थ है एक्सप्लेन ब्रीफली द एसेंशियल साउंड ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्वेश्चन 6 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 5 बोला ऑप्टिमम कैश बैलेंस एंड हाउ इट इज अराइव्ड एट। ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होता है और वो कैसे अराइव होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है इनसे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट की क्या अप्रोचेस है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिसीवेबल वो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके डिफरेंस पूछा अपन को। वर्किंग कैपिटल परमानेंट और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है वो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट फैक्टर आर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या क्या फैक्टर डिटरमाइनिंग रहेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या फैक्टर डिटरमाइनिंग करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स है जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ कह रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट पूछे हम उनसे सोर्सेस ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल और न्यू ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बाय बैंक्स एज पर द कैनन कमिटी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 से कहना चाह रहा है डिस्कस वेरियस अप्रोच और डायमेंशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डायमेंशन रिसीवेबल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट क्या है वो क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ सोर्सेस वेरियस सोर्सेस ऑफ कैश एंड देयर एप्लीकेशन। वेरियस सोर्सेस ऑफ कैश क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमसे पूछा गया है। तो ये थे अपने क्वेश्चंस। आइए कि क्वेश्चन हर क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा था। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम दैट अराइज इन अटेम्प्टिंग टू मैनेज द करंट एसेट्स, the current liability and the interrelationship that exists between them. The goal of working capital management is to manage a firm's current assets and current liability in such a way that a satisfactory level of working capital is maintained. The financial managers must keep in mind following principles are as follows. क्या क्या principles हैं आइए हम पढ़ते हैं। Principle of optimization ये पहला principle है हमारा। Principle of risk variation, principle of cost of capital, principle of maturity of payment, principle of equity position। ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इन प्रिंसिपल्स को डीपली पढ़ते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट सो कीप दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड। इन अदर वर्ड्स वर्किंग कैपिटल शुड बी मेंटेन एट ऑप्टिमम लेवल। ठीक है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द assumption that the rate of return on investment is linked with degree of risk in the business. Third principle है हमारा risk of principle of capital. Each source of working capital is different cost of capital. Degree of risk also differ from one source to another.
प्रिंसिपल 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट. The principle of state that the working capital should be raised from different sources that the firm is able to repay them and maturity out of flow of funds. Fifth principle है principle of equity position. ये हमारे 5 principles है. According to this principle, the principal amount of working capital invested each component should be allocated justified by the firm and the equity position. ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. फिनिश होता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे प्रिंसिपल पूछे थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कि जो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क वेरिएशन, मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी पोजीशन, ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स थे. अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा है. डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है. आइए देखते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर एज फॉलोस. मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंश्योरिंग लिक्विडिटी, मैनेजिंग रिस्क, इंप्रूविंग कैश फ्लो. ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव हैं. मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो. मिनिमम कॉस्ट ऑफ कम से कम कैपिटल लगे. इंश्योरिंग लिक्विडिटी, और जो भी हमारे एसेट्स हैं वो क्या हमारे इतनी जल्दी लिक्विड कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. मैनेजिंग रिस्क को मैनेज करना. इंप्रूविंग कैश फ्लो, कैश जितना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल कैश होगा उतना ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना ईजिली होगा. आइए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं डीपली. बाय ऑप्टिमाइजिंग द बैलेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटी, a company can improve its profitability by optimizing the amount of working capital tied up in non-productive assets and maximizing the return of investment capital. Second objective, minimizing the cost of capital. By effective managing working capital, a company can reduce the need for short-term financing, which can be more expensive than the long-term financing. This can help to minimize the cost of capital and improve the company's overall financial health. And ensuring liquidity, effective working capital management helps to ensure that the company has enough liquidity to meet its short-term obligations, such as paying bills, advances. Question 4. Managing risk. Working capital management can help to minimize the risk to financial distress by ensuring that a company has enough cash reserves to cover unexpected returns, expenses and weather any financial downturns. Fifth है improving cash flow. By optimizing inventory levels, managing account receivable and account payable, and monitoring cash flow, a company can improve to its cash flow and reduce needs for internal financing. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है. आइए इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं. The working capital requirement of a business firm depends to a great extent upon the operating cycle of the trainers. The operating cycle may be defined as the time duration starting from the procurement of goods or raw material and ending with realization of sales. It is the time duration required to convert into sales. After the conversion of the resources into inventory and cash, the operating cycle of the manufacturing company has the following phases. First phase is acquisition of raw resources such as raw material, labor, power and fuel, etc. Second, manufacturing of the product, which includes conversion of raw material into work in progress. Third, conversion of work in progress into finished goods. Conversion of finished goods and product into accounting receivable. Fifth है conversion of accounts receivable into cash. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट पूछा था जो कि हमने आपको एक्सप्लेन करा है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में सर चलते हैं. डिफाइन कैश मैनेजमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम. कैश मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है. आइए पढ़ते हैं.
Cash is one of the current assets of a business. It needed at all times to keep the business doing. A business concern should always keep sufficient cash for meeting its obligation. Any storage of cash will hamper the operation of a concern, and any excess of it will be unproductive. Cash is the most unproductive of all the assets, while fixed assets like machinery, plant, etc. are and current assets such as inventory will help the business in increasing the earning capacity. Cash in hand will not add anything to the concern. Its context that cash management and तो हमने अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे. अपना क्वेश्चन नंबर 5 है ऑप्टिमम कैश बैलेंस आउटपुट्स क्या दिया है. ऑप्टिमम बैलेंस कैश बैलेंस क्या होता है और कैसे अराइव होता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है. तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. According to Bauman model, optimum cash level is a level of cash at the carrying cost and transaction costs are minimum. The transaction cost equals to the cost such as vehicle, brokerage, registration and other costs involved in getting the registration, getting marketable service converted into cash. Liquidity in the key requirement of the effective treasury operation, but is holding excessively liquidity and experience luxury in the current interest rate environment are one of the main objective of the treasury management in knowing what your optimum cash balance should be. Cash is traditionally considered to be physical currency that we use to carry around in our wallets, but for the purpose of treasury management has traded as defining. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था. 5th था. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देख लेते हैं. एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट की क्या क्या वेरियस अप्रोचेस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है. आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. The 3 most popular inventory management techniques are push techniques, the push and just in time technique. आइए पहली टेक्निक क्या है देख लेते हैं. The push strategy for inventory management. The push strategy. Second है the push strategy of inventory management. The push strategy of inventory management, and third है the just-in-time strategy for inventory management. The push strategy is a method of inventory conduct in which items are pushed down from the manufacturer to store, warehouse or business. Just a customer employee will then purchase as the item from inventory on hand. The pull strategy for inventory management. The pull strategy method of inventory management, which is the store, warehouse and a business pull an item only when a customer employee orders instead of an item moving down from supply chain to move up, from which can take a lot of time. The just-in-time strategy for inventory management. The inventory time strategy is similar to the pull strategy. Business order inventory just in time to fulfill a customer order on a business need. Of course, successfully implementing a just-in-time inventory management strategy requires reliable supply vendors and third-party logistic partners. Without them, a business could fail to meet customer demand, which is always a recipe for disaster. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाह रहे व्हाट डू यू मीन बाय रिसीवेबल. रिसीवेबल क्या होता है. रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिनसे हमसे पैसा लेना हो या कोई एसेट लेना हो या कोई हमने फ्यूचर में उसको क्रेडिट दिया उसका रिटर्न लेना हो, उसको हम रिसीवेबल बोलते हैं. एन्यूमरेट द वेरियस कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल. वेरियस कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल क्या है वो हमसे पूछा गया है. आइए देखते हैं. सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट द मोस्ट प्रोमिनेंट फोर्स of the modern business. The firms adopt this method of selling goods to protect itself from competitors and to attract the more customers to buy its product at favorable terms. When a firm sells goods and services on deferred payment basis, it is said to the firm that it granted trade credit to customer. Trade credit is the other rewards known as the receivable. Trade credit को ही receivable बोलते हैं.
Our book debt, the book debt has the characters. The carrying cost of your accounts receivable are the expenses incurred by a company for managing and hold its accounts. Receivable, the goods on can include but not limited to the interest, expensive collection cost, but bad debt expenses are the opportunity cost of not being able to invest the money elsewhere. Discuss concept of capital. ये हमारा क्वेश्चन 7 पे यहाँ पे खत्म होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहना चाह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो कहना चाह रहा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड वेरिएबल कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल क्या होता है और उसका डिफरेंस पूछा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का और परमानेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। ये टर्म वर्किंग कैपिटल is commonly used for the capital required for day-to-day working in the business concern, such as day-to-day working in a business. Concerns for purchasing raw material, meets day-to-day expenditure and salaries, wages, rents, rates, advertising. But there is such disagreement among various financial authorities as to exact meaning of the term working capital. Working capital means the minimum level of current assets. Current assets that a business needs to have order to sustain day-to-day operation and represent the long-term investment in current assets required to support the ongoing needs of the business cycles. Permanent working capital is considered a fixed that remains relatively situable over time. It is the maintaining the smooth functioning of the business. Variable temporary working capital. Temporary working capital also known as the fluctuating working capital. ठीक है, temporary working capital को fluctuating working capital refers to additional working capital needs to meet short-term fluctuating working capital that changes it represents the working condition of that changes with sales cycles, with seasonal demands, production cycle and other temporary factors. Temporary working capital is required to specific period that can vary throughout the year. क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। What factors are determining the working capital requirements? पे क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं उसको क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है। What are the factors determining the working capital requirement? The multiple factors influencing the working capital requirement of the business, they are vary from business to business. The following are the top 8 factors affecting working capital that are common in every business. First is sales, length of operating cycle. Third, inventory management policies. Fourth, size of business with the credit policy. Seasonality of business nature, production technologies, contingencies. Sales. For any business, the size of the sale matters. To have a higher sales member, the business needs to maintain higher current assets in the form of inventory and cash at hand to sustain the operation and fulfill demand. The length of operating cycle. The operating cycle refers to the number of days it requires to acquire the inventory, sell in the inventory and collecting cash in the hand of the inventory. Third factor है आपका inventory management policy. Working capital requirement also depend on inventory management policy of the company. For example, if a company wants to stock all the raw material before starting production. Fourth factor is size of business. The working capital requirement go up with the growth in the size of the business and state of operation. A company that operates on credit policy. Credit policy also indicate the working capital requirement of the business. A small business has to depend on deferred payment to drive sales and secure business orders. Sixth factor is seasonally business. Seasonally of business. Many businesses don't generate throughout every sales through the year of and are seasonal specific. For example, business dealing in the woolen garment, tourism industry, seasonal fruits, exports, etc.
Seventh factor, nature of production. Nature of production technology incorporates in business. Plants also impact working capital needs. For example, if a plant uses a labor-intensive manufacturing process, the cost of wages will be higher compared to those plants. Eighth, contingencies. Eighth factor, and risk in business also impact operational efficiency and working capital needs. Factors like inflation and reduction demand due to changing trends in the market. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ खत्म होता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेन द वेरियस रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 10 के नजर वेरियस रूल्स एंड टेक्निक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्या है उनसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है. आइए इसका आंसर देखते हैं. Here are some of the tools that can be should be integrated with inventory management to give you control and visibility. You need to support sufficient operations. First technique is barcode data collection. The perpetual inventory system is highly independent on timely and accurately of reporting. Manually reporting can be plagued by delays, errors, missing and transaction and undue burden of the working force to collect and enter the data. Cycle counting to improve accuracy. Inventory accuracy is very important to efficient planning and control of inventory. Sadly, most inventory tracking systems are woefully inaccurate without an third ABC analysis for prioritization. Cycle counting is usually set of using ABC analysis to identify more important and less important items mentioned above. Fourth, integrated planning and execution. The primary law of ERP and improve customer service, counting demand, which optimizing resources including inventory and reduction cost, lots tracking and traceability. Not every company needs serial number and not tracking traceability much more than collecting the information and recognized of the inventory list of production records. The 8 inventory management techniques of manufacturing. अब आइए 8 inventory management of manufacturing क्या है वो पढ़ते हैं. First है FIFO, second है LIFO, third है just in time, fourth economic order quantity, EOQ, fifth average costing, sixth cycle counting, seventh ABC analysis, eighth perpetual inventory system. First FIFO. FIFO is first in first out is the most common inventory management techniques used in manufacturing. Second this is the system helps to ensure that the oldest products are used first and reduce the chances of spoilage. ठीक है. Second LIFO, last in first out. LIFO, last in first out, is the method that used to calculate the cost of inventory for the cost of goods sold. As the name suggests, the LIFO inventory valuation, the method sum that the last in item placed into the inventory are sold first. Just in time. Just in time inventory is a system where the business only order enough stock to meet current customer demand. For the economic order quantity. Economic order quantity modes help business determine the optimal order quantity for their inventory. Fifth, average costing. To use the average cost and the weightage average method of manufacture, assign the cost of items in inventory based on the total cost of goods purchased on manufacture in a period divided by the total number of items. Average cost formula, total cost of production, number of units produced. Sixth, cycle counting. In cycle counting, inventory checks and balances from confirmed with physical inventory counts to match records. Seventh, ABC analysis. ABC analysis is the ABC inventory management determine the value of your inventory based on the item importance. Eighth, perpetual inventory system. Perpetual inventory system live inventory management software automatically records sales, purchase and inventory uses through computerized POS system and ERP manufacturing software. ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा खत्म होता है. ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बचा रहा है. Write short note of the following
sources of permanent working capital, new trends in financial working capital by banks as per Finance Committee. ये तो पॉइंट्स में हमसे शॉर्ट नोट पूछा गया है, इसका दैट मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया इन 2 पॉइंट्स पे। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल must be founded with the long-term capital source such as equity or preference shares, debentures, long-term loans, and businesses retained earning. Working capital sources can be long-term, short-term, and spontaneous share capital, retained profit. Working capital sources can be long-term, short-term, and spontaneous share capital, retained profits, debentures, long-term loans, and provision for depreciation are usually considered long-term working capital sources. इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फिनिश होता है। आइए क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। Discuss various aspects of dimension of receivable management. Discuss the various aspects of dimension of receivable management की various dimensions का concept क्या है, हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा। आइए देखते हैं। Aspects of receivable management, credit policy are rules and regulations that a company may set while the selling goods or service on credit. A credit policy may compromise decisions based on credit standard, credit terms, and collection efforts. Determining credit policy may involve several things such as deciding on the total duration of the credit, which is the credit period, and the cash discount the customer may get as well. Formulated credit policy can allow you to suffering these, understanding and determining the customers who require credit. Decide and set the right payment terms. Customer calculate and set limit on accounts without standing credit. Finding the procedure which are essential to deal with the responsible accounts. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ कैश एंड देयर कैपिटल एप्लीकेशंस। The various sources of cash and their application are as follows. क्या क्या various sources हैं of cash के और उसके application के, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेंटरी एक्टिविटीज, थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये हमारे 3 सोर्सेस हैं। आइए सोर्सेस को डीपली पढ़ते हैं। Cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities are primary source of generating cash from. It indicates how the revenue generated from the operating activities of a firm. Second है cash flow from inventory activities. Cash is generated from the investment in fixed assets as the firm earns profit accordingly from such investment of fixed assets throughout the operation activities of the organization in various forms and other operation acquisition of fixed assets, that is plant and machines, land and building, furniture and fittings. Third है cash flow from financial activities. Cash flow from financial activities are arise from the process of issuing shows. The venture in cash inflow of cash arise from the redemption of debenture or redemption of preference share as back of equity shown and payments for interest and dividends. तो ये थे हमारे 3 sources, cash flow from operating activities, cash flow from inventory activities and cash flow from financial activities. ये 3 sources हैं जिससे कि हम various source of cash of application के ये 3 नाम हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए